Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 81st lecture of this series of crpc. So in today's lecture we would start with certain sections which are left in previous lecture, that is 256. Yes, section 249 पढ़ा था आपने. That is, if the complainant is absent, then what will happen? If the charge was not framed, then the accused will be discharged. So similarly in the summons case, if the complainant is absent, then what will happen? If the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto, to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless for some reasons he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. तो उधर क्या था, उधर they are saying that you are discharging, and here they are saying you are acquitting the accused. तो किसी भी स्टेज पर अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है, द मजिस्ट्रेट कैन एक्विट द accused एंड स्टॉप द प्रोसीडिंग्स. लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, देयर आर सफिशिएंट रीजंस, या फिर कंप्लेनेंट का बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अपियर होना उस केस में, कंप्लेनेंट वगैरह का बयान वगैरह हो चुका है, सो इन दैट केस द कोर्ट में एडजॉर्न या फिर मे बी एनेबल द कंप्लेनेंट टू अपीयर ऑन द नेक्स्ट डेट. ये लिखा है ना, एक्विट द accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. अब 249 में वो एडजर्नमेंट की बात नहीं कर रहे. अब 249 में they are talking about the discharge. That was a warrant trial and this is a summons trial. Provided that where the complainant is represented by pleader or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of the opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. So that discretion is given here. The similar discretion is not found in section 249. यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेनेंट का प्लीडर प्रेजेंट है या फिर कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है, कंप्लेनेंट के प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको उससे कोई सवाल नहीं पूछना, in that case the court will go ahead with the proceedings even in the absence of the complainant. Close to the provisions of subsection 1 shall so far as may be apply also to the cases where the non-appearance of the complainant is due to death. अब डेथ वाली बात तो धर्म नहीं की थी. इन सेक्शन 249 दे आर सिंपली सेइंग अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो आप एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दोगे. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट है तो आप एक्यूटल कर सकते हो या फिर फर्दर डेट लगा सकते हो या फिर उसके एब्सेंस को डिस्पेंस करके आप ट्रायल कर लो. और अगर वो एब्सेंट अपनी डेथ की वजह से देन ऑल्सो यू कैन एक्विट द एक्यूज्ड इवन इफ द कंप्लेनेंट इज डाइड एंड his non-appearance is due to his death, then also the acquittal of the accused can be done by the magistrate. Otherwise जो नॉर्मल क्रिमिनल मैटर्स हैं उनमें क्या होगा, अगर विक्टिम मर भी जाए then also the state will continue the proceedings. Even if the complainant dies or the victim dies, the prosecution will continue. complainant की जगह पे आप किसी और को substitute कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर summons trial है, it is a smaller offense. So here they are saying and giving the power, अगर कंप्लेंट मर भी गया फिर भी आपका प्रोसीडिंग्स को स्टे करके और एक्यूज्ड का एक्विटल किया जा सकता है. परंतु इसकी जगह अगर कोई बड़ा ऑफेंस होता, बड़े ऑफेंस में कंप्लेनेंट के मर जाने के बाद आप प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं करोगे या खत्म नहीं करोगे. Now let's see section 257. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter, before a final order means what? Before the judgment. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them,
the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. Read again. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, मतलब किसी एक के खिलाफ या सबके खिलाफ विड्रॉ करना चाहता है, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, there has to be a acquittal order. यहाँ पर discharge नहीं होगा. If you withdraw the complaint then there should be acquittal. ये क्वेश्चन पीटी में पूछते हैं. अगर कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट सेक्शन 250C में 57 में विड्रॉ कर लिया है, then it will be a case of acquittal. और अगर 256 में नॉन अपीयरेंस के बेसिस पर केस को खत्म किया, then what it is? Then also it is acquittal. 249 में it will discharge. It is discharge 249 में, लेकिन 256 में it is acquittal. And section 257 also it is acquittal. So इसको आप लिख लेना. If the complainant withdraw its complaint under section 257, or if the complainant withdraws its complaint under section 257, then it is case of acquittal in summon case. Or if under section 256, due to the non-appearance of the complainant, magistrate decided not to continue, then also he would pass a judgment of acquittal only, not of the discharge. अब एक दो ग्राउंड लिख लो when the complainant can withdraw its case. अब मान लो उसी केस में जिसमें कंप्लेंट कर रखी है कंप्लेनेंट ने, उसमें पुलिस केस भी हो गया, then the complainant can withdraw its case. So first ground police case is if the police case is pending. और उसी में दूसरा लिख लो the prosecution in the complaint case will fail due to some technical defect. Now section 258. 258 if you remember section 300 का शायद 5th clause था, जिसमें in that we had reference of this section. 300 का 4th या 5th clause था जिसमें हमने 258 की बात की थी. If in any summons case instituted otherwise than upon complaint. Otherwise than upon complaint means what? Police report. Otherwise than upon complaint means police report or information. In any summons case instituted otherwise than upon complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the CJM, Chief Judicial Magistrate, any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witness has been recorded. Means सारे important witnesses का evidence हो चुका है, then they are saying the judgment will be of acquittal. और अगर in any other case, कोई और केस है जहाँ पर सारे witnesses का evidence record नहीं हुआ है, then release the accused and such release shall be effect of discharge. तब उसका effect discharge का होगा अगर सारे witnesses का evidence record नहीं हुआ है. So if all the witnesses are not taken into evidence, then it would be a judgment of discharge, effect of discharge. अब इसमें एक केस लिख लीजिए आप सेक्शन 258 में, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संघार SANGHAR इब्राहिम IBRAHIM लोधा LODHA 1971 गुजरात हाई कोर्ट का केस है, नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. It was held in this case the court can stop the proceedings under section 258 if it finds that there is no prima facie case, or if it finds that there is some formality missing in the complaint due to which the prosecution may fail.
अब कब एक्विटल होगा, कब डिसमिसल होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसमें। अगर प्रिंसिपल विटनेसेस के पहले आपने केस स्टॉप किया है, देन इट इज डिस्चार्ज, एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल विटनेसेस, if you stop, then it is a case of acquittal. So that's all for this topic. Now please shift over to chapter 30, reference and revision, section 395. मान लो there is a criminal case in which the trial is going on. Now in the course of trial, a question of law arises. या तो ट्रायल के आखिर में भी arise हो सकता है, at the time of argument. ट्रायल याद करो, लास्ट में कहीं क्वेश्चन अराइज हो सकता है एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट, या फिर बीच में कहीं क्वेश्चन अराइज हो जाता है. एंड द क्वेश्चन इज सच अपॉन विच द डिसीजन ऑफ केस इज बेस्ड. द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज सच अपॉन विच द डिसीजन इज बेस्ड. उस केस का डिसीजन उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बेस्ड है. दैट इज द होल केस इज बेस्ड अपॉन the question of law. Now this court is having its own opinion regarding the question of law. Now it can be a question pertaining to some interpretation of law, किसी एक law के provision का एक interpretation, or it may be a question issue pertaining to the fact that a particular law is inoperative or particular law is unconstitutional, a particular law is illegal, etc. मतलब जो law आप apply कर रहे हो, that law is inoperative. मतलब ऐसा कुछ contention है, it is void, it is unconstitutional. और या फिर किसी एक legal law के provision पर, उसके interpretation पर question है. So this court, suppose it is a judicial magistrate first class or session court, whatever, he is conducting the trial and he is having its own opinion. उसका अपना ओपिनियन है उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर. अब वो चाहे तो अपने ओपिनियन के बेसिस पे जजमेंट पास कर दे, और बाद में जो अपील में जो होगा सो देखा जाएगा. ही कैन डू दैट, ही इज हैविंग द पावर. ही डू नॉट सेंड हिम रेफरेंस, ही डू नॉट सेंड दैट इनटू द रेफरेंस. इंस्टेड ही वुड डिसाइड द केस ऑन हिज ओन ओपिनियन. बट इफ ही फाइंड्स द हाई कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट, that High Court or the Supreme Court has not made or passed any judgment regarding that particular question in the past. पहले उस पॉइंट पे, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई जजमेंट उसके अपने हाई कोर्ट का नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का है. तब भी वो चाहे तो वो अपने आप उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करके जजमेंट पास कर सकता है, या फिर he can send that question in the form of reference to the High Court. In the form of reference means he will frame the question, he will write his opinion that in my opinion this should be the law, and that question along with the case file will be sent to the High Court. And now as long as the matter is pending into the High Court, till then this person has to stop his proceedings. The proceedings would be stayed, and when the High Court conduct the hearing on that question, the High Court will pass an order, and that order will be sent back to this trial court. And now the trial court is bound to follow the opinion of the High Court and pass the judgment accordingly. So ये जो process है, this is called the process of reference. This process is called the process of reference. Now let's see section 395. Where any court is satisfied that a case pending before it involves a question as to validity of any act. Where any court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation, or any provisions contained in an act, ordinance, regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, and is of the opinion that such act, ordinance, regulation, or provision is invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court to which that court is subordinate, or by the Supreme Court. इसके ओपिनियन में जो ट्रायल कोर्ट है उसके ओपिनियन में द लॉ इज
इनवैलिड और इनऑपरेटिव। लेकिन ऐसा डिक्लेरेशन हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। कौन सा हाई कोर्ट? दैट हाई कोर्ट टू विच इट इज सबऑर्डिनेट। द कोर्ट शैल state a case setting out its opinion and the reasons therefore and refer the same for the decision of the High Court. Stating a case means what? Stating a case means the court will frame a question that this is the question and this is based on so and so facts, and in my opinion the law is inoperative, etc. And then he will send the matter to the High Court. अब हाई कोर्ट में पूरा केस भेजना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट विल हियर द पार्टीज, क्योंकि पार्टीज का भी अपना आर्गुमेंट होगा ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। तो हाई कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही डिसाइड करेगा। अब सेकंड क्लास पढ़ो। ए कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फिट और ही थिंक्स फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट और हिम टू विच द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 डू नॉट अप्लाई रेफर फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ राइजिंग इन हियरिंग of such case। अब यहाँ पर लिख रहे हैं any question of law। पहले लिखा था फर्स्ट क्लास में validity of any act, ordinance or regulation etc। अब in second clause they are saying any question of law। any question of law में the interpretation of law etc will also fall। फर्स्ट क्लास में किसी एक्ट के ऑर्डिनेंस की या रेगुलेशन की वैलिडिटी का सवाल भेजते हो आप, लेकिन सेकंड क्लास में किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सवाल भी आप एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सवाल आप भेज सकते हो। सो यू कैन अदर सेंड द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इन द फर्स्ट क्लॉज, और द कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से सेंड द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन सेकंड क्लॉज। Clause 3. Any court making a reference to the High Court under subsection 1 or subsection 2 may, pending the decision of the High Court thereon, either commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon। अब यहाँ पे भी बेल का प्रोविजन है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी कह रहे हैं the accused can be released on bail। तो जब तक मैटर रेफरेंस में पेंडिंग है, जब तक या तो accused को कस्टडी में भेज दो, जुडिशियल कस्टडी, और या फिर लगता है कि इन दैट केस द बेल कैन बी ग्रांटेड, देन ग्रांट हिम द बेल। व्हेन ए क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयरऑन एज इट थिंक फिट एंड शैल cause a copy of such order to be sent to the court by which the reference was made, which shall dispose of the case conformably to the said order। Means the trial court is bound by the to dispose the case or to pass the order in confirmation with the order of the High Court। अगर आपको अपनी मर्जी से डिसाइड करना था तब आपको रेफरेंस में नहीं भेजना चाहिए था, फिर आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो। लेकिन अगर आपने रेफरेंस में भेजा देन यू आर बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा उसी के बेसिस पे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय whom the cost of such reference shall be paid। अब एक्यूज्ड पे करेगा या फिर स्टेट पे करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। सो मेक ए समरी ऑफ दिस टॉपिक, समराइज कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और ये उम्मीद है जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले वो आपने साथ के साथ जॉट डाउन किए, because all are important one, because often may ask in the examination about these questions। अब इसमें कुछ provision है calling off for, so this topic in this sections we would study in revision, later on we would cover the topic revision। So that's it for the topic of reference। These two sections would come under section for on that topic reference 395 and 396। In the next lecture we would continue the topic jurisdiction। हम टॉपिक jurisdiction पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 170 ऑनवर्ड्स ऑफ CRPC। सो फॉर दैट आईपीसी के कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, अबैटमेंट, क्रूअल्टी, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉबरी, डकैती, कॉन्स्पिरेसी, थेफ्ट, चीटिंग, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन,
kidnapping, abduction, concealment of stolen property, and the attempt of these offenses. So it is expected that all these topics of IPC must be read by you. Then only you would better understand the topic jurisdiction in the CRPC. Thank you for watching this lecture. Thank you.